हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में हम जिस टॉपिक की एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 4, रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 50 प्लस एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जो एमसीक्यू है हम 2 पार्ट्स में देख रहे हैं। तो इससे पहले जो है पार्ट 1 में जो है 25 एमसीक्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। तो इस वीडियो में हम जो है रिमेनिंग जो 25 एमसीक्यू है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज अ क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसके ऑप्शन है क्वालिटी एश्योरेंस डील्स विथ एक्टिविटीज व्हिच प्रूव दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन बी, quality assurance deals with activities which aims at customer satisfaction. Option C, quality assurance deals with controlling the quality of product by inspection. And option D, all of the above. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, quality assurance deals with activity which prove that product and service meet the required quality standard. Next question है, क्वालिटी इज डिफाइंड बाय द कस्टमर इज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन ए एन अनरियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। ऑप्शन बी, अ यूजर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। ऑप्शन सी, अ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। एंड ऑप्शन डी, अ प्रोडक्ट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अ यूजर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी की डेफिनेशन है कस्टमर ने डिफाइन की है, तो इस वजह से इसका सही आंसर आएगा यूजर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स एंड द इक्विपमेंट्स। तो इसके ऑप्शन ए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। ऑप्शन बी, फॉल्ट ट्री एनालिसिस। ऑप्शन सी, फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस। एंड ऑप्शन डी, टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस is the quality management program that relate to maintenance of the plant and equipments. Next question है, while setting quality objective dash to be considered। तो इसके ऑप्शन है कस्टमर नीड। ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशनल नीड। ऑप्शन सी, सप्लायर नीड। एंड ऑप्शन डी, वर्कर नीड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कस्टमर नीड। While setting the quality objective, customer need to be considered. Next question है, customer are primarily concerned with dash dash। तो इसके ऑप्शन है communication, courtesy and credibility of the salesperson। ऑप्शन बी, competence, courtesy and security of the salesperson। ऑप्शन सी, competence, responsiveness and reliability of the salesperson। and option D, communication, responsiveness and cleverness of the salesperson। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, communication, courtesy and creditability of the salesperson। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash helps organization reduce employee turnover and absenteeism। तो इसके ऑप्शन ए जॉब डिजाइन। ऑप्शन बी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी, वेग रिवीजन। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड absenteeism। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव डैश टू बी कंसीडर्ड। इसके ऑप्शन है मटेरियल क्वालिटी। ऑप्शन बी, मार्केट डिमांड। ऑप्शन सी, कस्टमर नीड। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कस्टमर नीड। व्हाइल सेटिंग द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, कस्टमर नीड टू बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द मशीन डाउन टाइम। तो इसके ऑप्शन ए वेस्ट। ऑप्शन बी, नो मटेरियल। ऑप्शन सी, ब्रेक डाउन। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM and ISO both focuses on dash dash। तो इसके ऑप्शन है कस्टमर। ऑप्शन बी, एम्प्लॉय।
ऑप्शन सी सप्लायर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कस्टमर। टीक्यूएम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड आईएसओ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बोथ फोकसेस ऑन कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is responsible for quality objective। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फ्रंटलाइन मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ प्रोसेस टूल फॉर टीक्यूएम सिस्टम। तो इसके ऑप्शन है प्रोसेस फ्लो एनालिसिस, ऑप्शन बी हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी प्लियर एंड ऑप्शन डी कंट्रोल चार्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस मैपिंग इज अ डैश डायग्राम। तो इसके ऑप्शन ए डेटा फ्लो, ऑप्शन बी वर्क फ्लो, ऑप्शन सी सर्कुलर एंड ऑप्शन डी ऑडिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्क फ्लो। द प्रोसेस मैपिंग इज अ वर्क फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है the aim of just in time manufacturing principle is to eliminate। तो इसके ऑप्शन है टाइम वेस्टेज, ऑप्शन बी लेबर वेस्टेज, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ एक्सटेंसिव इन्वेंट्री एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर लाइकली टू डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ बेटर क्वालिटी एक्सपेक्ट। तो इसके ऑप्शन है कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन कॉस्ट, ऑप्शन बी इंसिपेशन कॉस्ट, ऑप्शन सी मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑप्शन डी वारंटी एंड सर्विस कॉस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेंटेनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज टू एस्टिमेट द वैल्यू एडेड बाय गिवन नॉलेज असेट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड। तो इसके ऑप्शन ए रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑप्शन बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी रिटर्न ऑन नॉलेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रिटर्न ऑन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्युअल्स एंड फॉर्मलाइज्ड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी इंडिकेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉलेज। तो इसके ऑप्शन है एक्सपांडेबल, ऑप्शन बी कॉम्प्रेसिबल, ऑप्शन सी डिफ्यूजेबल एंड ऑप्शन डी शेयरेबल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सपांडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ द फर्म। तो इसके ऑप्शन ए 20 इयर्स, ऑप्शन बी 15 इयर्स, ऑप्शन सी 30 इयर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20 इयर्स। एवरेज लाइफ ऑफ द फर्म इज 20 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है people's knowledge includes which of the following। तो इसके ऑप्शन ए insights, ऑप्शन बी institution, ऑप्शन सी relational information एंड ऑप्शन डी all of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है grouping ideas or details that are stored and recalled together as a unit is an example of which of the following। तो इसके ऑप्शन ए इन्फरेंसिंग, ऑप्शन बी कॉम्पिलेशन, ऑप्शन सी चंकिंग एंड ऑप्शन डी एक्सपर्टाइज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंकिंग। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following knowledge can be articulated, codified and stored in a certain media। तो इसके ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट नॉलेज, ऑप्शन बी टेसिट नॉलेज, ऑप्शन सी प्रोसीजरल नॉलेज एंड ऑप्शन डी डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मेटिव इंटरवेंशन स्पेसिफाइज a particular way to manage an organization is known as dash। तो इसके ऑप्शन ए इंटरग्रुप रिलेशन, ऑप्शन बी लार्ज ग्रुप, ऑप्शन सी स्मॉल ग्रुप एंड ऑप्शन डी ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following year James Watt invented the steam engine in the
इंडस्ट्रियल एज। तो इसके ऑप्शन ए 1762, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1764 एंड ऑप्शन डी 1765। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इन 1763। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड नॉलेज वर्कर्स प्रिविलेजेस ड्यूरिंग डैश। तो इसके ऑप्शन ए फर्स्ट इकोनॉमिक वेव, ऑप्शन बी सेकंड इकोनॉमिक वेव, ऑप्शन सी थर्ड इकोनॉमिक वेव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थर्ड इकोनॉमिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इनवेटिबल फैक्टर्स फॉर अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके ऑप्शन ए ट्रेस, ऑप्शन बी टीक्यूएम, ऑप्शन सी चेंज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चेंज। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम। तो इसके ऑप्शन ए प्रोडक्ट सेंटर सिस्टम, ऑप्शन बी कस्टमर फोकस, ऑप्शन सी इंटर इंप्रूवमेंट एंड ऑप्शन डी डिसीजन मेड बाय टॉप एग्जीक्यूटिव्स ओनली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कस्टमर फोकस। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।